Assalamu alaikum. I'm Ahmed Ali Naqvi and you are watching World in Focus with Ahmed Ali Naqvi. नाज़रीन, आज की इस एपिसोड में हम एक इम्पॉर्टेंट इशू पे बात करेंगे। इस सैटरडे को, लास्ट जो सैटरडे था, उसके अंदर हमने देखा कि सऊदी अरबिया के अंदर यूक्रेन के हवाले से एक ग्लोबल कॉन्फ्रेंस हुई। इट वाज होस्टेड बाय दी सऊदी अरेबियंस इन जद्दा, और इस कॉन्फ्रेंस के अंदर दुनिया के 40 के करीब स्टेट्स ने शिरकत की। इंपॉर्टेंट बातें दो थीं। एक तो ये थी कि ऑल मेजर रीजनल एंड ग्लोबल पावर्स वर पार्ट ऑफ दिस कॉन्फ्रेंस, बट रशिया वॉज नॉट इन्वाइटेड। तो इट लुक्ड एज इफ इट इज़ अ कॉन्फ्रेंस जिसके अंदर हम relatively वन साइडेड स्टोरीज जो हैं वो सुनेंगे। बट द अल्टीमेट एम ऑफ दिस कॉन्फ्रेंस वाज टू, फ्रॉम सऊदी परस्पेक्टिव, इट वाज टू गैदर द स्टेट्स टुगेदर फ्रॉम अक्रॉस द वर्ल्ड, वेस्ट से हों, अफ्रीका से हों, लैटिन अमेरिका से हों या एशिया से हों, और टू फाइंड आउट अ सोल्यूशन फॉर यूक्रेन्स प्रॉब्लम. From Ukraine's perspective, this conference was yet another signal that the world is gradually standing behind Ukraine and not with the Russians. इसी कॉन्फ्रेंस को लेकर हम आज एनालिसिस करेंगे, और सबसे पहले बात करेंगे इसके ऊपर कि ये जो कॉन्फ्रेंस है इसके पीछे मेन मोटिव क्या हैं, स्पेशली सऊदी अरबिया का ब्रॉड इंटरेस्ट क्या है, क्या सिर्फ पीस चाहते हैं या और भी कोई इंटरेस्ट हैं। फिर हम बात करेंगे इस कॉन्फ्रेंस के वजह से जो अमेरिकन हैं और यूक्रेनियंस हैं और वेस्टर्न कंट्रीज़ हैं उनका क्या पर्सपेक्टिव है, और इसी तरह हम फिर लास्ट पॉइंट बात करेंगे कि इस कॉन्फ्रेंस की फ्यूचर स्टेप्स क्या हो सकते हैं, वेयर कुड दिस कॉन्फ्रेंस लीड अस टू। सो लेट्स स्टार्ट नाज़रीन। स्टार्ट करते हैं। इस कॉन्फ्रेंस का पर्पज़ क्या था। बहुत से स्कॉलर्स डिफरेंट तरीके से इंटरप्रेट कर रहे हैं। वन ऑफ द मैनी इंटरप्रेशंस दैट इज़ अवेलेबल इज़ दैट जो सऊदी अरबियंस हैं, क्योंकि ये पहली कॉन्फ्रेंस नहीं है, इससे पहले हमने देखा कि डेनमार्क के अंदर एक कॉन्फ्रेंस हुई थी यूक्रेन की वजह से, लेकिन इट वाज नॉट ऑफिशियली गिवन एनी काइंड ऑफ कवरेज। और उस कॉन्फ्रेंस के अंदर जो इस साल जून में हुई थी, इस साल के शुरू में हुई थी, समर में, और उस कॉन्फ्रेंस के अंदर कोई जॉइंट स्टेटमेंट नहीं आई, उसके अंदर कोई डेलिब्रेशन पब्लिक नहीं हुई। इट वाज मोर लाइक अ वन साइडेड शो द सॉलिडारिटी ऑफ द यूक्रेन बाय द वेस्टर्न कंट्रीज, और इसमें मोस्टली एशियन स्टेट्स, अफ्रीकन स्टेट्स एंड लैटिन अमेरिकन स्टेट्स वर एब्सेंट। ग्लोबल साउथ जो है वो लार्जली मिसिंग था। अब जो कॉन्फ्रेंस है ये इट इज़ बिगर देन दैट, और इसके अंदर मैंने कहा कि 40,000 मुल्क हैं, जिसमें चाइना शामिल था, इंडिया वॉज इन्वाइटेड, इजिप्ट वॉज इन्वाइटेड, अगर आप लैटिन अमेरिका चले जाएंगे तो अर्जेंटीना वॉज इन्वाइटेड, साउथ अफ्रीका वॉज देयर। तो बहुत सारी जो स्टेट्स हैं, एशियन एंड अफ्रीकन स्टेट्स जो हैं और लैटिन अमेरिकन स्टेट, दे वर इन्वाइटेड इन दिस कॉन्फ्रेंस अलॉन्ग विद द वेस्टर्न कंट्रीज। ऑब्वियसली जो यूरोपियंस हैं, अमेरिकन हैं, दे वर ऑल्सो इन्वाइटेड। यूक्रेन जो है वो भी इन्वाइटेड था। अमेरिका की तरफ से पार्टिसिपेशन जो है वो उनके नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र जो थे उनकी तरफ से पार्टिसिपेशन की गई। चाइना के अंदर भी और इंडिया के वाले से भी जो टॉप उनके डिफरेंट ऑफिशियल्स थे, दे पार्टिसिपेटेड इन दिस कॉन्फ्रेंस। वाई सऊदी अरबिया वेंट फॉर दिस कॉन्फ्रेंस? एक तो अपेरेंटली ऑब्वियसली बिकॉज यूक्रेन वॉर इज इफेक्टिंग एवरीबडी इंक्लूडिंग सऊदी अरबिया एंड अरब स्टेट्स, तो इट मेक सेंस फॉर सऊदी अरबिया टू गो फॉर अ पीस, फॉर सच काइंड ऑफ पीस इनिशिएटिव. But there are other explanations as well. For some scholars, over the period of time since the Biden administration came, the Saudi Arabians had not so good relation with the Biden administration. हमने बहुत सारे डिफरेंसेस देखे। एक तो यमन वार के वाले से कुछ इश्यूज थे, फिर हमने देखा कि ऑयल प्रोडक्शन के वाले से जब बाइडन ने विजिट किया था दैट टाइम, और उसके फॉरन एंड ही रिक्वेस्टेड सऊदी अरबिया टू इंक्रीज द आउटपुट। इंस्टेड सऊदी अरेबियंस आफ्टर द विजिट they have in fact cut the output of global oil, creating what West calls a favorable energy environment for the Russians. तो कहीं ना कहीं पे सऊदी अरबिया के और जो बाइडन एडमिनिस्ट्रेशन है उसके दरमियान में कुछ ज़्यादा अच्छे रिलेशनशिप नहीं थे। एंड फॉर सम स्कॉलर्स दिस कॉन्फ्रेंस इज़ अ बैलेंसिंग एक्ट ऑन द पार्ट ऑफ द क्राउन प्रिंस मोहम्मद सलमान, हु इज़ ईगर टू ब्रिंग द वेस्टर्न इन्वेस्टमेंट्स अलॉन्ग विद द इन्वेस्टमेंट फ्रॉम चाइना एंड अदर स्टेट्स into its the project, जिसको विजन 2030 भी कहते हैं, और नियॉम सिटी जो प्रोजेक्ट है उसके अंदर ही इज इंटरेस्टेड इन ब्रिंगिंग इन्वेस्टमेंट्स. सो इट इज़ नॉट जस्ट अ पॉलिटिकल बैलेंसिंग एक्ट, इट इज़ ऑल्सो मेंट टू अट्रैक्ट द फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स टू मेक सऊदी अरबिया अ काइंड ऑफ हब ऑफ ग्लोबल इकोनॉमिक इन्वेस्टमेंट्स. तो ये उस सेंस में भी बहुत से स्कॉलर्स को इंटरप्रेट कर रहे होते हैं. दूसरा नाज़रीन जो एक्सप्लेनेशन की जाती है इसकी, दैट इज़ द फैक्ट दैट सऊदी अरबिया हैज़ रिसेंटली बीन ट्राइंग टू मेक पीस विद इट्स राइवल्स. हमने देखा कतर के साथ एक एग्रीमेंट हुआ, इस तरीके से हमने देखा कि उसके वाले से इसराइल के साथ एक रिलेशनशिप की बात की जा रही है विद द मीडिएशन ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स, और हमने देखा ईरान के साथ विद द मीडिएशन ऑफ चाइना एक पीस जो है इनिशिएटिव शुरू किया गया, जिसकी वजह से हमें यमन में रिलेटिवली पीस नज़र आता है, यमन के अंदर भी जाके. तो दिस इज़ पार्ट ऑफ दैट सऊदी अरबियन इनिशिएटिव इन विच दे वांट टू एंड कॉन्फ्लिक्ट्स नॉट for itself but also for the global powers and regional powers, and portray Saudi Arabia as a state that is peace-loving state rather than an aggressive and kind of conservative state. Historical perception Saudi Arabia के बारे में ये रही है that Saudi Arabians have been supporting wars, have been initiating wars, conflicts, they have been stoking rivalries of sectarian nature as well as religious nature. But this perception is it is being attempted to change this perception on the part of Mohammed Salman
और पर्टिकुलरली सिंस जमाल खशोगी इंसिडेंट, जिसके अंदर हमने देखा कि जो अमेरिकन अरब सऊदी अरेबियन अमेरिकन जर्नलिस्ट थे उनका मर्डर हुआ, जिसका इल्ज़ाम सऊदी अरबिया पे लगाया गया, बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से भी लगाया गया और उसको डायरेक्ट रिस्पॉन्सिबल ठहराया गया क्राउन मोहम्मद सलमान को। सो वो जो एक स्टिग्मा है उनके ऊपर, और वो जो स्टिग्मा है सऊदी अरेबियन स्टेट के ऊपर, दैट इट इज़ वायलेंट, इट इज़ एग्रेसिव एंड काइंड ऑफ ओल्ड एम्पायर, उसको दूर करने के लिए दिस इज़ वन ऑफ द मेजर स्टेप दैट ही हैज़ टेकन। आसान लफ्ज़ में नाज़रीन हम कह सकते हैं सऊदी अरब इज़ ट्राइंग टू गेट इटसेल्फ मेन स्ट्रीम्ड इन ग्लोबल मीडिया, मेन स्ट्रीम्ड इन इंटरनेशनल पॉलिटिक्स एंड बिकम रेलेवेंट इन रीजनल एंड ग्लोबल इशूज़। Last major factor that pushed Saudi Arabia to go for this peace initiative is to make sure that in the upcoming emerging Cold War between the United States and China, and possibly Russia standing behind China, the Saudi Arabians are not seen to be taking sides. आसान लफ्ज़ में नाज़रीन, जिस हम पाकिस्तान के बारे में बात करते हैं, that the Saudi Arabians are trying to make a no block choice politics in the emerging future Cold War, and this step is likely to be a part of that initiative as well. यहाँ पे हमें चाइनीज़ को इनवाइट करते हुए देखा, हम अमेरिकन को इनवाइट करते हुए देख रहे हैं, विच इज़ अ क्लियर इंडिकेशन। इसमें प्रो अमेरिकन एलाइज भी हैं जैसे इंडिया वगैरह है, जापान है, इसमें प्रो वेस्ट एलाइज भी हैं जैसे मैंने कहा बहुत से और स्टेट्स हैं जिसको इनवाइट किया गया। तो कहीं ना कहीं पे ये जो एक एक्ट है सऊदी अरबिया का, दैट शोज दैट इट हैज़ अ फ्यूचरिस्टिक पॉलिसी ऑफ नो ब्लॉक पॉलिटिक्स, एंड इट इज़ एज इम्पॉर्टेंट टू नॉट जस्ट द फॉर अमेरिकन ब्लॉक, बट इट इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट फॉर द अदर साइड, द चाइनीज़ एंड द रशियंस एंड अदर्स। तो कहीं ना कहीं पे सऊदी अरब जो है वो अपने एक बैलेंसिंग एक्ट इस सेंस में भी कोल्ड वार, इमर्जिंग कोल्ड वार के सेंस में भी एक परसेप्शन क्रिएट करना चाह रहे हैं। अब आते हैं नाज़रीन यूक्रेन के वाले से। फ्रॉम यूक्रेन परस्पेक्टिव दिस कॉन्फ्रेंस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज एज आई सेड अर्लियर, ये पहला स्टेप था, पहला डेनमार्क में हुआ कॉन्फ्रेंस पिछले साल, बट इट वाज लार्जली सिम्बॉलिक वन। दिस इज़ इंपॉर्टेंट बिकॉज इट इज़ द बिगर देन द डेनिश कॉन्फ्रेंस। सेकेंड, इट इज़ इम्पॉर्टेंट बिकॉज फॉर यूक्रेनियंस, इसके अंदर हमने देखा कि वो स्टेट्स भी शामिल हैं जो हिस्टोरिकली यूएन के प्लेटफॉर्म पे न्यूट्रल रही हैं, हु हैड नॉट वोटेड फॉर और अगेंस्ट यूक्रेन, और दिस इज़ अ स्टेप ऑन द पार्ट ऑफ द यूक्रेन टू मेक श्योर and try to convince through bilateral and multilateral debates to convince those states to hear the argument and the perceptions and the perspectives of the Ukraine, and therefore the purpose is to try to influence those states in favor of the Ukraine. And this is exactly what Ukrainian President Zelensky has said before coming to this conference. और उसने कहा कि जो ये this is a platform in which Ukraine would try to convince the states of the Ukrainian perspective and make sure that those states change their stance towards Ukraine. And particularly this is also important because it is happening in the context of a Ukrainian counter-offensive, जिसके अंदर हमने देखा बहुत audacious अटैक किए गए यूक्रेन की तरफ से। उसमें हमने देखा कि जो हमला हुआ था ब्रिज के ऊपर, क्रीमिया का और रशिया का जो ब्रिज है उसके ऊपर, और उसके बाद हमने 2 दिन पहले देखा कि एक शिप के ऊपर सी ड्रोन हमला किया गया बाय द यूक्रेनियंस। तो कहीं ना कहीं पे यूक्रेन का जो काउंटर ऑफेंसिव है ये सिर्फ ऑन ग्राउंड बैटल फील्ड पे नहीं है, इट इज़ लार्जर दैन दैट। और उस कॉन्टेक्स्ट में आई थिंक अगर नेगोशिएशंस होती हैं तो यूक्रेन विल बी एट अ बेटर बार्गेनिंग पोजीशन बिकॉज ऑफ इट्स ऑफेंसिव दैट इट हैज़ काउंटर ऑफेंसिव दैट हैज़ लॉन्च रिसेंटली। सो यूक्रेन सीज एज एन अपॉर्चुनिटी के ये जो कॉन्फ्रेंस है, इट टर्न्स द नॉट जस्ट, चूँकि ऑन ग्राउंड तो वो साइड्स टर्न कर रहे हैं, बट ऑन पोलिटिकल स्टैंड पॉइंट इट वॉन्ट्स टू टर्न the kind of global perceptions, global opinion and states' perspectives towards Ukraine and away from the Russians. Another objective of the US and Ukraine is that the Western powers, they want to portray this image that Ukraine is not just an issue of the Europeans, it is a global security issue, and it would not just concern the Europeans, it would also concern the non-Europeans, जैसे Arab states हैं या बाकी states हैं, they all are the stakeholders. This is more like an international problem rather than a regional problem. एंड दिस हैज़ ऑलरेडी बीन इंपॉर्टेंट बिकॉज हमने देखा कि रशिया यूक्रेन की जो ग्रेन डील कोलैप्स की, उस हवाले से हमें अफ्रीकन स्टेट्स की तरफ से, एशियन स्टेट्स इंक्लूडिंग पाकिस्तान, कुछ कंसर्न्स हमें नजर आई हैं, जिसमें हमने बिलावल भुट्टो साहब की स्टेटमेंट भी देखी उस हवाले से। तो कहीं ना कहीं पे ये इशू है, ये पोर्ट्रे किया जा रहा है थ्रू दिस मैसेज दैट इट्स नॉट जस्ट अ काइंड ऑफ यूरोपियन इशू, इट्स अ ग्लोबल इशू। लास्ट बट नॉट द लीस्ट फैक्टर नाज़रीन, जो कि फैक्टर है बिहाइंड यूक्रेन एंड वेस्टर्न आइडिया टू होल्ड दिस कॉन्फ्रेंस वाज एक बिगर आइडिया है, और वो जो अगर मैं ज़ेलेंस्की के अल्फाज दोहराऊँ तो उन्होंने कहा था कि दिस जो अरब कॉन्फ्रेंस है, दिस इज सऊदी अरेबियन होस्टेड कॉन्फ्रेंस है, दिस वुड बी अ स्टेप टुवर्ड्स अल्टीमेटली होल्डिंग बाय द एंड ऑफ दिस ईयर अ वर्ल्ड पीस समिट, और ग्लोबल पीस समिट की तरफ जो है वो एक स्टेप है, और दिस वुड बी जस्ट अ स्टेप टुवर्ड्स दैट गोल एंड टुवर्ड्स दैट डायरेक्शन. So they want to make sure that there's a global peace summit in which the global community should be convinced that Ukraine issue is important for not just European, for everybody, and there could be increasing pressure on Russia
to accept to the demands, और जिसके वास्ते ज़ेलेंस्की कहते हैं his 10-point agenda for peace. And that includes that Russians should withdraw all the territories, including Crimea, that they have captured over the years. So कहीं ना कहीं पे ये जो वर्ल्ड पीस समिट है, अकॉर्डिंग टू द 10-point एजेंडा ऑफ द यूक्रेनियंस, 10-point पीस प्लान ऑफ यूक्रेनियंस, ये अल्टीमेटली गोल है. एंड दिस कॉन्फ्रेंस इज जस्ट अ स्टेप टुवर्ड्स डायरेक्शन. इट विल ले द फाउंडेशन टुवर्ड दैट विच यूक्रेन होप्स कि वो इस साल के आखिर तक, प्रॉब्ली नवंबर या दिसंबर में, दे आर ट्राइंग टू होस्ट इट समवेयर इन यूरोप. सो अब आते हैं नाज़रीन इस पॉइंट के ऊपर कि क्या ये कॉन्फ्रेंस कोई मीनिंगफुल रोल प्ले करेगी. ऑब्वियसली नॉट. दिस कॉन्फ्रेंस इज़ मोर अ सिम्बॉलिक इशू, मोर अ डिप्लोमेटिक काइंड ऑफ tactic on the part of the Ukraine. I don't think it will have any major impact on ground जो offensive है, ground जो war है, that is likely to be largely creating a stalemate on the part of over there. And that stalemate, honestly speaking, suits both these states, Ukraine as well as Russia. On strategic fact point, on ground point, I think Ukraine would be at a loss because of the stalemate. लेकिन अगर मैं रशियन के वाले से बात करूँ, जितना stalemate रहेगा, सैंक्शंस प्रोलॉन्ग होते जाएंगे रशिया के ऊपर, और ग्लोबल प्रेशर बढ़ते जाएंगे रशिया के ऊपर जाके, एंड दिस इज़ लाइकली टू हैव अ पॉलिटिकल एडवांटेज टू द वेस्ट एंड यूक्रेन. बट ये पीस कॉन्फ्रेंस जो है, ये एक डिप्लोमेटिक स्टेटस को तोड़ने में एक रोल प्ले ज़रूर कर सकती है. रशिया वुड फील मोर पॉलिटिकल प्रेशर बिकॉज इट मे नॉट फेस द काउंटर ऑफेंसिव प्रेशर एज सच, बट इट डेफिनेटली वुड फील द पॉलिटिकल प्रेशर ऑन द पार्ट ऑफ द इंटरनेशनल पब्लिक ओपिनियन एंड इंक्रीजिंग स्टेट्स आस्किंग रशिया टू गो फॉर पीस. बट ऑब्वियसली नाज़रीन, रशियंस हैव बीन क्लियरली सेइंग दैट दे आर ओके विद दैट एंड दे आर एक्सेप्टिंग the idea of peace through African proposal as well as the Chinese proposal. But problem is that Ukraine is offering its own 10-point proposal, which is something that is a non-starter for the Russians. So कहीं ना कहीं पे ये जो peace conference है, it might be an attempt on the part of international community and particularly Saudi Arabia, which is having a major emerging role in global politics, to create a middle way between Russia and Ukraine. So to conclude, नाज़रीन, हम कह सकते हैं that this Russia-Ukraine conflict is getting older, but as it is getting older, it is becoming more complex because of the emerging developments on ground. As a result of which, the conference like these ones, they play a very, very important role. They show that international community is not silent. They show that international community is concerned, and this would be a pressure on both sides to make sure that they ultimately reach out to a peace deal. If that doesn't happen, अगर ऐसा नहीं होता, तो obviously this would be a loss to lose relationship, lose gain for not just Russia but also for Ukraine and the West. Thank you so much, Nazeen, for watching this program. Kindly like this video, share it, and subscribe to this channel. Allah Hafiz.